Good afternoon, everyone. Can you please let me know if I'm audible? Yes, sir, you're audible. Wonderful. All right, guys. Very, very warm welcome to the webinar. And as you know, we are going to talk about, in fact, everything about the CFA certification that you need to know. We'll be taking up all of your doubts. Any doubt you may have regarding this certification, it can be as basic as कि CFA होता क्या है, क्यों करना चाहिए CFA, राइट? क्या मुझे क्या फायदा होगा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, एंड सो ऑन, राइट? सो वी विल बी टेकिंग अप all your doubts. So don't worry about the doubts not getting resolved. But yes, I have a very small request that during the session, right, during the webinar, when we are going through the slides, when you're on a listening mode, it would be really helpful if all of you can be on mute, please. Right, that would help everyone to listen and understand and grasp whatever we are going to tell you about CFA. Rest assured, at the end of the session, we will be taking up all of your doubts, right? As many as you may have, 100, 200, 300, whatever, right? We'll be open to taking all of your doubts. And yes, uh, those who would be there till the very end, we'll be taking up a screenshot of your names. Make sure you have your correct names displayed, and you'll be receiving some freebies from our end on your email IDs very soon, right? Maybe in a day or two, you'll be receiving all the things, plus a surprise from our end. All right. So make sure you stay through the session till the very end. Now, another thing, another request that I have from all of you is that let's make it a very interactive kind of a session, right? It should not be a boring kind of a session जिसमें मैं बोलता रहूं and yeah, you're listening mode, you're scrolling your Instagrams along with it, right? So I'm sure a lot of you are doing that right now. So please stop, and let's make it a very interactive session wherein if we are spending our time, अगर आप लोग सब यहाँ पर आए हो, अपना संडे का 1 घंटा आपने मुझे दिया है, तो let's extract more than 100% out of this session. All right, with that promise, I'm gonna switch to the slides. Let me know if the screen is visible to you. Is it visible? Yes, sir, visible. Wonderful. Okay. How do I get my picture at the side? Okay, wonderful. You're able to see the slides, right? Yes, sir. Okay, wonderful. Let's go then. All right. So throughout the webinar, what is the plan of the session? What are we going to cover? We'll be talking about why should you go for CFA, and in fact, what is CFA at the very moment? Why are people going in for CFA certification? क्यों recruiters इतना ज़्यादा CFA demand कर रहे हैं आजकल? If you have recently seen some JDs, and if you have some interest towards getting into the finance and investment banking side, you would know that CFA is that one certification which is really, really in demand from the recruiters, right? कैसे आप कर सकते हैं CFA? What are the steps involved? What are the costs involved? What is the exam pattern of this beautiful certification? क्या scope of or opportunities है market में? This is where I get the most of the questions from. Whenever I go to colleges and take sessions there, people generally come and ask questions like, यार मुझे ये बताओ मेरा क्या फायदा होगा, राइट? अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस सर्टिफिकेशन पे, सो व्हाट इज द रिटर्न दैट आई विल गेट? किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, किस टाइप का स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं? क्या ये मुझे हेल्प करेगा अगर मैंने इंडिया से बाहर अपना करियर बनाना है? या राइट, सो मेरे फ्रेंड्स जो कोई और सर्टिफिकेशन कर रहे हैं या फिर
सिर्फ ग्रेजुएशन उसके बाद एमबीए सोच रहे हैं, उनके मुकाबले, उनके कंपैरिजन में क्यों मुझे सीएफए करना चाहिए, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टेक in this session, and how can we help you in getting there. All right, so a lot of interesting stuff planned, and yes, it's gonna be fun. All right, let's go. So the CFA, let me open this to the panel. Please unmute yourself and let me know, आपको क्या लगता है, क्या CFA क्या है? What is CFA? What do you think is CFA? Anyone, just feel free to unmute yourself. Or if you want to put it on the chat box, it's visible to me. Analyzing portfolios. Okay, Khushi says it is basically analyzing portfolios. Okay. Okay, what else? What else? Derivative study. Are baap re. Derivative study. Okay. So you're throwing all technical bombs, huh? Jargons. Good. Okay, what else? और क्या? CFA क्या है? Index analysis. अरे by God. अरे भाई, कोई नॉर्मल बताने वाला है यहाँ पे? इंडेक्स एनालिसिस, अरे बाबा रे, ये इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स होंगे, राइट? ओके, वंडरफुल. चार्टर फाइनेंस एनालिसिस. ओके, फेयर इनफ. Analyzing finance and valuations, taking care of financials of a company. Taking care of. How would you take care of them? You mean analyzing, right? How a company should invest and grow its valuation? Fair. Basically, guys, whatever you're telling here, be it derivatives, be it index analysis, be it portfolios, all the technical jargons that you've thrown here, you're absolutely right, right? Basics of financial analysis involving core financial concepts, absolutely right. And all of you are absolutely correct, right? So wonderful, guys. You know about CFA, right? So Chartered Financial Analyst, CFA certification. One beautiful thing is that it is globally recognized, right? And all of you know that, right? It's coming from the CFA Institute, US. It's a beautiful and a gold standard when it comes to corporate finance. There are various things involved. Accountancy is something else, finance is something else, right? So we, in this certification, we generally talk about corporate finance, right? So it's offered by the CFA Institute. It is the gold standard in the field of investment management and financial analysis. So basically, all of you are absolutely correct, right? This certification will equip you to analyze a company, to understand investment analysis, to analyze portfolios, basically asset management, right? Getting on the deals, we'll come to that, okay, what are the different areas that you can explore when we'll talk about the opportunities segment, right? So this is a beautiful certification. Now, what are the benefits? Why should you go for this CFA certification, right? So a lot of benefits are there, right? So the first benefit is that it's a global recognition, right? Recruiters globally, whenever we talk about finance, the trust is always on someone who has done their CFA, right? And when I say that, there might be a question in your mind right now कि यार ऐसा क्यों यार, एमबीए में भी तो हो सकता है, राइट? क्या अगर मैंने एक टॉप टियर से एमबीए किया हुआ है तो उसमें ट्रस्ट नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा. But MBA, I don't know how much you are aware, but MBA is just touching on a lot of concepts. But when you want to go deep, you're becoming a professional, right? So trust is always more when somebody has that CFA certification involved, because you are going down to the very nitty-gritties. It's a very comprehensive study that you do. Okay? Wonderful. So this CFA would cover a broad range of topics. और ऐसा नहीं है guys, please know this, that ऐसा नहीं है कि this will be everything that is new. ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम ऐसी चीज होगी जो आपने कभी सुना ही नहीं हो. For example, let me draw some references on, if you are an eco honor student, right? If you're doing economics, आपके corporate finance आपका subject है, आपका quants
आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, राइट? सो ऑल दैट इज देयर इन द CFA करिकुलम, राइट? इट जस्ट गोज ऑन टू एन एडवांस्ड लेवल। तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा या दिस विल बी समथिंग वेरी वेरी न्यू टू यू, राइट? सो दैट इज नॉट गोना हैपन. For example, if you are a BCom honor student or you are doing MBA finance, then this directly aligns with what you are studying. Financial reporting, right? You study accounts, you study management accounting, you're studying corporate finance. You do have also economics as a subject, right? So again, this is going to touch, not touch, go deep into a lot of things that you already are aware of, राइट? बहुत कम ऐसा होगा कि समथिंग ऐसा बाउंसर आ गया कि आपको पता ही ना हो, राइट? जनरली ऐसा नहीं होगा. Yes, it is trusted, right? It's an employer top choice certification when it comes to finance, when it comes to investment banking, when it comes to hedge funds, when it comes to derivatives, when it comes to index, all those technical jargons that you threw on the chat box, right? And a lot of consulting firms as well. I'll give you an example. So, I generally have a tie-up with a lot of, not a tie-up, basically, a collaboration, you can say, or they are with me, right? So, a lot of top management people in Goldman Sachs, I hope you know about Goldman Sachs, and a lot of top investment bankers in the country, right? So, I happen to be in discussion with few of them, uh, and we were sitting in Mumbai, and we were chatting about this certification. I told them that, I am actually having that institute, and we're training people. So they directly said me one thing. यार, तुम जो CFA लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं ना, मुझे उनका resume दे दो. We are really looking for good candidates who have done CFA level 1, and we'll hire them on the spot, right? So look at the trust that these company also uh, have on CFA professionals, and they are also looking to hire someone on the spot, right? Who have the knowledge of CFA. Because yes, if you are doing a professional certification, guys, there is a trust. It shows your dedication, right? So that is something that you really need to consider. Okay, guys. Before I move on, am I going too fast? Is the pace fine? Are you okay with the speed? Speed Yes, sir, ticket? absolutely fine. Perfect. Chalo. Nice. All right. Regarding the job opportunities, to answer your questions, yes, it is a global certification. It's a global job opportunities. In fact, Middle East में CFA बहुत boom पे है, right? So I'll tell you about myself also in a while. So I happen to take a lot of batches in the Middle East, basically Dubai, Abu Dhabi, Oman, Riyadh kind of sessions. So there, the CFA and the opportunities of CFA are immensely high, right? US, immensely high. Singapore is the global VC hub nowadays. A lot of VCs, a lot of investors are sitting out of Singapore, right? So yes, the opportunities are globally, they are at a high level. They're really looking for someone who has done this kind of a certification. One other benefit of doing that CFA is global community access that you get. राइट आज की डेट पे आई डोंट नो आपको आपको पता है या नहीं इस स्टेज पे, क्योंकि आप सब कॉलेजेस में हैं अभी. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस सेंटेंस, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. सुना है किसी ने ये, दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ? एनीबॉडी Yes, sir. सुना है? क्या मतलब हुआ इसका? सर लाइक जितना Basically, अच्छा आपका जितने लोग जानते हैं उतना आप प्रोग्रेस कर सकते हो, आपके कैसे कर कॉन्टेक्ट सकते रहेंगे. The कैसे more कर you सकते network, the more you know different people and can ask for favors in future if you want to. favors? Right. So basically, the more you know people, right, the more bigger your network is. If you're networking with a lot of people, you get to know them, और वहीं से business निकल के आता है, guys. आप let me give you a reality check, guys. If somebody is here जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, राइट, और कुछ लोग होंगे जो साइड बाय साइड बिजनेस रन भी कर रहे होंगे, नेटवर्क करिए.
लोगों से मिलिए, लोगों के साथ जाके चाय पीजिए यार. I mean, chai, coffee, beer, wine, whatever. You get the gist of it, right? लोगों के साथ जाइए, उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए. I'll give you another practical example. I have a colleague. So I was working with EY earlier. I'll tell you about myself later. There is a colleague of mine, and आप यकीन नहीं करेंगे, उसका अपना जो पैकेज है, ही इज वर्किंग इन अ वीसी राइट नाउ, उसका अपना जो पैकेज है वो है, बट साइड बाय साइड बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क, राइट, ही इज एबल टू अर्न 20 lakhs per annum more through the side things, right? So just imagine the power of that network, right? So you get access to the global community. Zarur network kariye. Now coming on to the major question, and you already have given a lot of right answers in that quiz that we conducted. Charter holders earn 54% more than their peers who have not done any certification, right? Imagine, can you look at the figure? Are you looking at this figure? 54%? That's huge. That's a huge jump, right? So that's the power of CFA level 1. In fact, yes, you get job even after level 1, right? I'll tell you that about it later. But yes, you earn 50%, 54% more, and that's huge, right? And it's hard to believe that, but that's what the stats say. Okay, now how can you get to the CFA charter? Guys, please mute yourself. I really request you to please mute if you're not speaking. What is the roadmap of CFA? Yes, the first step is you register for this exam. You have CFA level 1, level 2, level 3. There are 3 levels of this certification: level 1, level 2, level 3, right? After you qualify level 3, you submit a reference letter and you're a charter holder, right? So this is basically a very broad roadmap to how do you actually get to that stage of charter holder. Now, a lot of students ask me that, यार पूरा करना जरूरी है? Level 1 के बाद नौकरी लग जाएगी? Definitely लगेगी, right? So CFA level 1 के बाद there are opportunities which make you earn 8 lakhs per annum plus, right? So 8 plus lakhs per annum की आपकी job सिर्फ CFA level 1 करने के बाद लगती है, right? CFA level 2, you can imagine, right? That's a huge jump. CFA level 2 के बाद, okay, so you should know about this. After you qualify CFA level 2, right? After you're CFA level 2 certified, you are at par with the CFA charter holder, right? But yes, it's immensely beneficial if you get level 3 also done and you're doing your charter, because that completes your cycle, that completes your degree. You get that certification with you, right? So job हर level के बाद आपकी बहुत अच्छी लगती है. Now, अब main question यार, क्या है एग्जाम? कैसा एग्जाम है? लिखना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरह, या जो आप अपने कॉलेज में एग्जाम्स देते हो उसकी तरह? नहीं. So a beautiful thing here is the question format is MCQs. You have multiple choice questions. Level 1 is a very plain simple multiple choice questions. Level 2 is the case study scenario based questions, and level 3 will have some essay. You have to write something down in the form of an essay, and there will be MCQ based questions as well. लेवल 1 साल में 4 बार होता है: फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर, ठीक है? लेवल 2 2 बार, मई एंड अगस्त, एंड लेवल 3 2 बार, फरवरी एंड अगस्त. सो ये सर्टिफिकेशन ऑन एंड ऑल आप 1.5 साल में आप खत्म कर सकते हो सर्टिफिकेशन. All right. Number of questions you can see on your screens. There are 2 sessions that happen: morning session and evening session on the same day, right? 135 minutes के सेशन रहेंगे आपके, ठीक है? 2 सेशन होंगे, एक सेम डे में 2 सेशन होंगे, एंड that's how that's case study based, Pulkita, right? Scenario based question. You'll be given scenario and you'll be have to answer the questions, right? You'll have multiple choice questions after the scenario. Now, the costings. There is a one-time enrollment fee which goes to the CFA Institute, which is $350. And there are exam fees involved, right? So currently, let's talk about the May sitting. देखो जनरली क्या होता है, आप फेब्रुअरी सिटिंग भी दे सकते हो, बट फेब्रुअरी सिटिंग में प्रॉब्लम ये है कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट खत्म हो गया है इस समय, राइट?
So वैसे it's $990 exam fees when you apply for an early bird. Otherwise, it's $1290. So that's a good discount that you get if you register early bird. राइट फरवरी के लिए अर्ली बर्ड खत्म हो गया है. मई के लिए अर्ली बर्ड 16 अक्टूबर तक वैलिड है. राइट सो अगर आप रजिस्टर करते हो 16 अक्टूबर तक आपको $990 पे करने हैं फॉर एग्जाम फीस. सर बहुत ज्यादा है, क्या करें? स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए. राइट सो देयर इज एन ऑप्शन where CFA Institute looks at your circumstances and you can write to them and apply for a scholarship. Right, scholarship मिल सकती है basis you'll be required to verify something and you'll get the scholarships. Otherwise, it's one-time enrollment fee $350 and the exam fees of $990. ठीक है, कोशिश कर लिए अर्ली बर्ड. मैंने मई इसीलिए लिखा है क्योंकि अर्ली बर्ड वैलिड है अभी. राइट, वंडरफुल. Coming on to the scope and opportunities, now let me tell you something about myself. I, of course, apart being the founder over here, I am an investment banker myself, and I am an international instructor for a lot of these certification programs. When I say international instructor, I happen to take sessions. My sessions are there in the Middle East. My sessions are there in Paris. My sessions are there in US. My sessions are there in Amsterdam as well. Right? इसीलिए international लिखता हूँ मैं. Okay. So yeah, apart from this, previously I was involved with EY in their transactions domain. Before EY, I was working with KPMG in their audit space. All right. So that's about me, guys. But coming on to the certification, coming on to the scope of this certification, कैसी jobs आप aim कर सकते हो CFA करने के बाद? आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में सुना होगा, राइट? क्या है आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? अच्छा, वन रियलिटी चेक गाइस. वो जो अगर आप मुझे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बोलने वाले हो, सो दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट? ऐसा नहीं होता है. आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है? मतलब एक चैनलाइज करना फंड्स को, जिसको रिक्वायर्ड होगा और जिसको सरप्लस होगा, सरप्लस से रिक्वायर्ड वाले को कनेक्ट करना. मतलब इन्वेस्टर्स और कंपनीज को कनेक्ट करना. यस. Right? Helping the helping the companies raise capital, analyzing valuation and consulting, investing in potential. आप champion हो, आपको सब पता है पहले से. Investing in potential companies for high returns, absolutely correct. Wonderful, wonderful. So this is investment banking, guys, and investment banking में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, right? Investment banking is a bucket जिसमें बहुत सारे बॉल्स आप डाल सकते हो. पहला उसमें आता है ऑफ कोर्स डील मेकिंग, राइट? डील मेकिंग के बाद आता है आपका पोर्टफोलियोज, एसेट मैनेजमेंट. एसेट मैनेजमेंट के बाद आता है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस, आपका स्टॉक इक्विटी रिसर्च, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो इन सब में अपॉर्चुनिटीज हैं. इनफैक्ट आई वाज सिटिंग विद द एक्स CEO of Goldman Sachs in India, and he was telling me, so he has now started his own fund in Mumbai also, and so I was sitting with him, and he told me that Ayush, Mumbai में CFA अपना start करो यार, because I need people जिनको ये CFA की knowledge है. And he already has an employee base in Mumbai, and everybody is now I'm having that regular trainings over there, and I'm giving them the knowledge about all these things only, right? So Mumbai mein global markets, wherever there are global markets, the scope and the opportunities are immensely there, huge, right? आजकल हर कंपनी अपना इक्विटी रिसर्च डिवीजन बनाने पे लगी हुई है कि यार हम भी स्टॉक्स एनालाइज करेंगे, हम भी लोगों को बाय सेल मैंडेट बताएंगे, राइट? रिसर्च एनालिस्ट, राइट? इसमें इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हाथ है. इकोनॉमिक्स जो कर रहे हैं आप में से जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हैं, that's a bomb combo, right? So उस केस में your current curriculum is gonna help you a lot, right? Financial advisors, a lot of people have this financial consulting domains, asset management, companies like Goldman Sachs, Motilal Oswal, JP Morgan. Now I know I'm giving you big names,
But all these companies of Big Fours are also like KPMG, Deloitte, EY, PwC, GT, and all, right? So they are also having their consulting, transaction consultings, right? Stock research reports भी निकलती हैं in some companies की. Apart from the VC and the startup sphere, the venture capitalists, the early stage angel funds, private equities, all of these people have that mandatory requirement of you having that CFA certification. Yes, agar aapne MBA, IIMs and all se kiya hai, you get that added advantage. But you know, if you have done CFA, you're equally at par. All right. So that is the benefit of having that CFA certification. Now, how can we help you there? We take a small batch of CFA क्योंकि हमारा target है कि आपको एक attempt में pass कराना है यार. We don't want the repeats, you know, and it's cumbersome for you a lot. So to help the college students, what we have come up with that we'll be providing, apart from you studying, right? जब आप तक पढ़ रहे होगे, you can also do an internship with us, right? So we provide guaranteed internship to the top 5 performers in our batch. So what you can do is you can actually apply the knowledge real time as and when you're studying as also, right? Practical, unparalleled learning experience. We get you the industry people. They come, they tell you about how it is actually there in the industry, right? What's happening in the industry. We keep these sessions open to our batch so that they can come, they can interact. We try to conduct the physical meetings also depending on where are the most students available, right? For example, you might be in Delhi, and when we have someone who's in Delhi, we organize that session for you so that you can come, again, network, and you can get that knowledge and insight as well. One-to-one mentorship available, and that's beautiful thing that you can have is that you can directly get mentored by the trainer. जैसे मैंने आपको बताया, we take small batches. उस small batch का फायदा ये है कि मैं आपके साथ या trainers, whatever, who's taking the different subjects. So I'll be taking some subjects. There are 2 more trainers who will be taking different subjects. They will connect with you. They will mentor you. They will sit with you one-to-one, and they will be guiding you. They will be telling you. Again, जैसा मैंने बताया था, एक attempt में pass करना है आपने ये, right? It's not that you can't have multiple attempts, but we don't need to do that, right? Okay. Regular tests and assignments to help you prepare, right? ये बहुत जरूरी है यार. It's not that कि आपको सिर्फ practical, theoretical ज्ञान मिलता जा रहा है. ज्ञान मिलेगा, but अच्छे वे में मिलेगा, right? उसको आप practically tests और assignments, weekly tests के help से will make your base so strong that when you are sitting into that exam, you'll be smiling and you'll be saying that यार ये तो simple था, right? We have to get to take you to that stage. Again, जो आप टेस्ट करते हो, जैसा आप परफॉर्म करते हो, उसके बेसिस पे आपका एक परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, राइट? उस परफॉर्मेंस एनालिसिस को समझते हुए कि ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन टॉपिक्स पे. एंड ओके, लेट्स सिट विद द मेंटर, लेट्स सिट टुगेदर एंड डू सम क्वेश्चंस ऑफ द एरियाज दैट यू आर वीक एट, राइट? सो वो चीजें बहुत जरूरी हैं जो बहुत लोग नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली करना चाहिए, राइट? अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया है, आपका ऑफिस है, आप नहीं अटेंड कर पाए, आज कॉलेज का एग्जाम है, इट्स फाइन गाइज. यू हैव दैट रिकॉर्डेड बैकअप्स अवेलेबल. सर, रिकॉर्डेड बैकअप्स के बाद कोई डाउट हो तो you have live doubt clearing sessions available. ठीक है? Guaranteed placement assistance is also what we give. ठीक है? Yes, after level 1 also we'll help you get to the placements, right? Again, that should convince you. Okay. Modes available, you have classroom trainings available, live online. Aajkal everyone prefers having that live online things, and self-study videos, right? You have to decide on what mode you have to select, but all 3 modes are open to you. When is the batch starting, guys? The start date is 21st of September. The batch that's starting level 1, we are coming up for 21st of September. This will be applicable for February and May attempts. Options generally are, we generally take Monday, Wednesday, Friday evening sessions, and Saturday, Sunday, those are the morning sessions.
right? 3 to 4 hours की हमारी एक class रहती है. But this batch specifically of 21st of September, that's a weekend batch that we are coming up with, right? So yes, generally we have two options, but 21st September ka batch is going to be a weekend batch, right? 4 hours ka session रहता है, and we generally have this early bird discount going on, and this will give you flat 30,000 course all inclusive. यार GST VST सब इसमें डाल दिया, ठीक है? So आपको all in all 30,000 you'll have to pay to get yourselves registered with us, right? And it's, guys, this, trust me, this is peanuts if you compare the return that you are getting out of this certification. All right. Okay, ये आपके काम की slide है थोड़ी सी, right? The credentials and the placements, these are the companies that we keep working with. बहुत सारी और हैं, but मैं भर नहीं सकता था इसको लोगों से. So yeah, so these have students working at the good positions, and yeah, so these are the companies, these are the placements that you can also think about. All right, guys. Yes, so we are present in Delhi, we're present in Gurgaon, we're opening an office in Mumbai, and we are there in Dubai as well. All right. So all in all, you will be in safe hands if when we talk about the certification. आ रहा हूँ, guys. Questions पे आ रहा हूँ मैं आपके. Almost there, guys. All right, guys. Opening up the panel for the questions. Let's get it. हाँ जी. Questions. Opening up the panel. Okay, chalo ji. How many students per batch? Generally, we prefer a batch of 15 to 20 students only. उससे ज्यादा हम नहीं लेते हैं. क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट्स भी करानी और प्लेसमेंट से पहले अच्छे से पास भी कराना है. ओके. दिस फीस इज फॉर लेवल 1 और ओवरऑल? नहीं नहीं, लेवल 1. अरे लेवल 1. 30,000 is for level 1. How many students per batch? Done. I am planning a dual degree of MBA and CFA. Which would you suggest I do first, Bhav? Bhav, आप अभी क्या कर रहे हो? Which year you are in and what are you doing currently? Currently, you're in undergrad? You just graduated eco honors. तो MBA का एग्जाम CA साथ साथ करो, साथ साथ करो, राइट? ऐसा नहीं MBA करके 2 साल बाद आप CFA करोगे, तब तक तो मार्केट चेंज हो जाएगी पूरी, राइट? तब क्या पता कोई और डिग्री उस समय हाइप हो जाए, राइट? ऐसा नहीं होता. But what I'm trying to say is don't lose out on the opportunity, right, that you have right now. Okay. I am eligible for which attempt? I just joined my college. If you've joined your college, okay. लक्ष्य, आप देखो, जिन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, एक बात समझिए, आप सेकेंड ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप अटेम्प्ट आप थर्ड ईयर में देंगे, right? You can start your registrations, you can get yourselves registered in the second year of college, but you have to attempt it in the third year. All right. CFA before ये हो गया. Sir, I am a class 12 student. अरे वाह. Shall I pursue CA or CFA as of current scenario? I have great knowledge about stock market and finance. उफ, आपने 12th के बाद क्या करना है? आपने CA करने का सोचा हुआ है? देखो गाइस, इस समय, I don't want to say this on recording though, but I'll avoid saying this. CFA कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? बट अगर आपने CA करने का सोचा हुआ है, CA is also a good certification that's going to give you the knowledge of accounting, tax, also finance a bit. But again, CA करने के बाद आप सोचो आप इन्वेस्टमेंट बैंक में डायरेक्टली घुस जाओगे, नहीं होगा, राइट? टाइम लगेगा. आपको वो कॉर्पोरेट फाइनेंस की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? So CFA is a beautiful certification that gets you there. Difference between CFA level 3 and charter holder? कुछ नहीं. CFA level 3 is the third part, right? उसको करने के बाद आपको charter holder is just a certification that you get. जैसे कि आपको डिग्री मिलती है आपकी, right? It's a certification that you get. Okay. Is there a restriction on how many levels of CFA you can clear as an undergrad student? अंडरग्रेड में आप कर ही नहीं पाओगे. आप देखिए, अंडरग्रेड में आप फाइनल ईयर में अपना CFA
फर्स्ट लेवल 1 दे सकते हैं, राइट, एंड द जर्नी कंटिन्यूज आफ्टर दैट. MBA is hectic as it is साथ साथ. How, sir? MBA हेक्टिक है, नो डाउट, बट अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई. पल्लवी, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, राइट. अगर आपको करियर चाहिए, अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको जॉब भी अच्छा चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. अब इसका मतलब ये नहीं है आप कॉलेज एंजॉय मत करो. College life is not gonna come back. That's the best thing that can happen to you अभी at present. Trust me. If you're in college, chill यार. But साथ साथ अपना जो करना है करो. I'm sorry I'm saying this on recorded session, but ठीक है, अपना ऐश करो, अपनी बकचोदी भी करो थोड़ी सी, बट पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, राइट. सब कुछ करिए. How to apply for scholarship? It's the link is there. Connect with us. We'll help you apply for scholarship. Khushi, can I just unmute and ask? Please do. Hi, You sir. wanna? Yeah. Yeah. So I'll just give you a background. I'm from arts and I have completed my graduation in May 2024 and Okay. I'm planning for MBA exam in Okay. 2025. So I mean, Okay. I'll be giving this year as well, but the actual attempt will be for 2025. So Okay. would you suggest knowing MBA preparation and CFA preparation, or should I go for a job like, which will give better return in MBA later on, Uh, like a okay. work ex, I mean. वर्कएक्स तो हेल्प करेगा ही करेगा, फॉर श्योर करेगा. बट वर्कएक्स आप कैसे लोगे अगर आप अगले साल दोगे एमबीए? सो व्हेन आर यू गोना स्टार्ट? यू विल बी एमिंग फॉर 26 Jan admissions. Would you be not aiming for sure. 26 Oh admissions or yeah, 25 admissions? 2026 admissions. 26 admissions. So हाँ, तो 25 I'll be giving the exam. आप वर्कएक्स लीजिए अपना. वर्कएक्स विल ऑलवेज हेल्प यू. But which give me more weight in MBA, like CFA exam or a work वर्कएक्स. ex, वर्कएक्स. because I can't do all three ऑफ together. कोर्स. ऑफ Yeah. कोर्स. वर्कएक्स विल बी बेटर. बट फिर आप एक काम करिए, जब आपकी एमबीए स्टार्ट हो जाए तब आप सीएफए शुरू करिएगा. अब इफ यू आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग फॉर एमबीए आप कैट दे रहे हो, जीमैट दे रहे हो? CAT, कैट CAT, दे रहे हो तो JAT, SNAP. ऑलरेडी आपके पास बहुत बर्डन है कैट के Mm. लिए, राइट. सो अभी आप सीएफए करोगे, आपका कैट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा. दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड राइट नाउ. ठीक है, अभी आपको फुल फोकस अपना कैट पे करना चाहिए. अब कौन सा मई नवंबर नेक्स्ट ईयर का कैट दे रहे हो? इस साल भी दूंगी, but my actual aim with proper, preparation would be for next year because I started off late this देखो, year. अगर आप नेक्स्ट ईयर नवंबर का अटेम्प्ट देना चाहते हो कैट के लिए, तो बहुत टाइम है आपके पास. फिर तो आप सीएफए लेवल 1 कर सकते हो, So I क्योंकि shouldn't वही go for डायरेक्टली work आपको ex. हेल्प करेगा. सॉरी. So इफ I यू आर shouldn't गेटिंग अ go for जॉब, work ex. if you are getting a job, see, if you are getting a job, go for workx for sure. ठीक है. बट Yeah. अगर अभी आपको जॉब नहीं करनी या जॉब नहीं मिल रही है, समथिंग लाइक दैट, अगर आप कहते हो कि नहीं यार जॉब बाद में करेंगे, तो आप सीएफए कर सकते हो. बट फर्स्ट प्रेफरेंस, टेक अप अ वर्कएक्स राइट नाउ. Okay. ठीक One है, more डोंट लूज आउट. question. या. या. Yeah. Supposedly I get into a good college, MBA, but I don't यू विल. get in finance specifically, my domain. Say I get in HR. So do you think CFA would still hold any importance with MBA in HR? अरे एक बात बताओ ना भाई, आप अपना करियर उसके हिसाब से घुमा दोगे क्या कि कौन सा एमबीए मिलती है? आपका एम क्या है? एम एम आपका इस साइड पे जाना है, या एम आपका ये है कि अगर मेरे को एचआर मिल गई तो मैं एचआर बन जाऊंगी? एम क्या है? Finance. अगर एम फाइनेंस है तो कोई भी डोमेन हो, फिर आप सीएफए कर लेना. फिर यू हैव So टू it गेट दैट won't नॉलेज ना. affect इफ anything. नो नो, इट डजंट Okay. अफेक्ट. Okay. All right. Thank सी you. रिक्रूटर्स आल्सो अंडरस्टैंड कि आपको कॉलेज में हो सकता है कि वो प्राइमरी सब्जेक्ट ना मिले, बट सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में जो इलेक्टिव्स आएंगे उसमें आपको फिर फाइनेंस लेना पड़ेगा. Yes, yes. Okay. Got it. ठीक है. Thank you so much. वंडरफुल. स्टूडेंट्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड कैन डू एब्सोल्युटली. तो ह्यूमैनिटीज कम है क्या किसी से? कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. डोंट वरी, we'll help you with all the basics से start होता है सब कुछ. What's the scope of eco honor students in CFA? आप स्कोप ही स्कोप है. इको ऑनर्स तो डायरेक्टली अलाइंड है सीएफए से गाइस. आपका कौन सा आपका सब्जेक्ट है, राइट?
You have quants, quantitative topics, you have economics, and all other overlapping topics. बहुत सारे overlapping topics हैं आपके, right? So eco honors plus CFA is a bomb combination. ठीक है. I read somewhere, as per the new criteria, we can give CFA level 1 exam in second year as well. Is this correct? Because it's just 22 months before graduation. Yes, you can, but it depends कि आपकी preparation उसमें हो सकती है या नहीं हो सकती, right? So you'll have to really see. You'll have to see what time is. That's why we suggest कि आप second year में अपनी prep start part कर लो, and third year में you give the level 1, because you need some time, good amount of time to prepare. Is any exam is needed like TOEFL or IELTS to take admissions in CFA institute? No. You just need to have your passports, guys. A passport जरूरी है, उसके बिना नहीं दे पाओगे exam. Okay. Is there age limit to the course? No. Can I do CA and CFA together? अरे बाबा रे, मतलब कर सकते हो, कर लो. अगर आप कर सकते हो तो कर लो. But focus on one, because these both are two different fields. CA में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप CFA की पढ़ाई करो, right? Unless you are on, you really have time when you're doing your articleship and all. Difference between MBA in finance and CFA. MBA will touch on the concepts. CFA will take you deep down into the concepts. Okay. Can you share the PPT, please? Wow, I will share. No, not a problem at all. What is the scope of economics? ये तो हो गया. Today ये तो हो गया. ये भी हो गया. Can we give CFA exam while we are? ये भी हो गया. Is there some global degree I can pursue as of now? Just joined college. लक्ष्य, कॉमर्स स्टूडेंट हो? यस सर. कॉमर्स स्टूडेंट हो? अगर आप 12th के बाद इमीडिएटली कोई ग्लोबल डिग्री करना चाहते हो, यू कैन लुक एट ACCA, बट आई वुड सजेस्ट कि ACCA आप अभी रुक जाओ. आप क्या करो, इन द मीन टाइम आप स्किल्स लो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, टेक एक्सेल नॉलेज, टेक फाइनेंशियल मॉडलिंग, टेक वैल्यूएशन का नॉलेज, राइट? सो ये छोटी छोटी जो आप स्किल बेस्ड कोर्सेज कर सकते हो ना, ये स्किल बेस्ड कोर्सेज करिए, राइट? So we run our investment banking batch also. Apart from CFA, we have other batches also. अभी मैं आपको ये नहीं कहूंगा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में कि आप डायरेक्टली उस बैच में ज्वाइन कर लो, बट छोटी छोटी ये कोर्सेज करते रहो. आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गए, एक्सेल हो गया, बिजनेस वैल्यूएशन हो गया, ये सारी चीजें जरूर करिए, राइट? बिकॉज सी, जब रिक्रूटर्स आएंगे ना, अभी आपको क्या लगता होगा यार ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली जब रिक्रूटर्स आएंगे, आप कंपटीशन इतना है आज की डेट में, एवरीबडी इज लर्नेड यार. आज की डेट में रिक्रूटर्स सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने सर्टिफिकेशंस किस टाइप की करी हैं. और यार आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल. मेरे पास एक स्टूडेंट आया, he had 25 certifications, और वो सर्टिफिकेशंस ऐसी थी कि उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं था. जिस जॉब के लिए वो जा रहे हैं उससे दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, राइट? एंड ही सेड कि यार सर मैंने इतनी सर्टिफिकेशंस करी है, मैं फिर भी रिजेक्ट हो गया. हो गए ना यार, क्योंकि जब आप आंसर ही नहीं कर पाओगे कि यार आप इस जॉब से आपकी सर्टिफिकेशन अलाइन कैसे होती है, आप बताओ कैसे आंसर करोगे, राइट? सो आप सर्टिफिकेशंस, रेलेवेंट सर्टिफिकेशन जरूर करिए. जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस हो गया, वैल्यूएशन हो गया, एक्सेल हो गया, मॉडलिंग हो गया, प्रोजेक्शंस एंड ऑल, राइट? सो ये सर्टिफिकेशन जरूर लेते रहिए अपने कॉलेज में, राइट? फुल ऐश करो यार कॉलेज में, फुल ऐश करो, बट साथ साथ अपना रिज्यूमे बिल्डअप करते रहो, ठीक है? इज देयर सम, ये हो गया. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन CIIA? CIIA और CIA? मेरे को बताओ. इज इट नेसेसरी टू डू सम एडिशनल कोर्सेज फॉर स्किल सेट्स लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? नहीं, एडिशनल तो चलना पड़ेगा बॉस. आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी एजुकेशन खत्म हो गई. एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, राइट? बस CFA में आपको वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, इन सब का ज्ञान मिलेगा, बट एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग इज समथिंग जो ओवर एंड अबव आपको करना पड़ेगा टू गेट टू दैट, टू हिट दैट जॉब, राइट? टू हिट अ गुड जॉब. What is the average prep time needed for CFA level 1? Average prep time depends on you यार, it depends on you. अगर आप अभी रजिस्टर करते हो, आप फरवरी वाला अटेम्प्ट भी दे सकते हो. अगर आप अभी रजिस्टर करते हो, आप मई वाला अटेम्प्ट भी दे सकते हो, राइट? इट डिपेंड्स अगर आप बर्डन ले सकते हो या नहीं ले सकते. जनरली 3-4 महीने भी से कि आप आराम से पढ़ाई करो यार, अच्छे से पढ़ाई करो. What will be better? I'm currently in 3rd year of economics honors. Eco plus MBA in finance plus CFA. Eco
या देखो, अगर आप इको प्लस एमबीए प्लस सीएफए कर सकते हो तो दैट विल बी ह्यूज, राइट। बट अगर आप अभी के लिए कुछ देखना चाहते हो, एमबीए आपने सोचा कि ठीक है 2-3 साल का वर्क एक्स ले लूं, उसके बाद एमबीए करूंगी या करूंगा, तो आप अभी फिर सीएफए करो, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स। If someone is a first year student of eco honors presently, should he aim for November 2025 2025 CFA? करो, बिल्कुल करो। How many marks do we have to get to a good for a good percentile? It's a see, इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, ये रिलेटिव मार्किंग होती है, राइट। इसमें आप मार्क्स नहीं, ये नहीं बोल सकते कि आपका इसके ऊपर आया तो आप पास हो गए, इससे नीचे आप पास नहीं होगे, राइट। इट्स ऑल रिलेटिव। रिलेटिव मार्किंग कैसे होती है कि यार क्या होता है जब ग्लोबली एग्जाम हो रहा है, राइट, कितने स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो ना बार हाई होता रहता है, राइट। बट ऐसा नहीं है, यू कैन इजिली गेट टू दैट। एनालिटिक्स कंप्यूटर्स, इसके लिए बोलो, इसके लिए बोलो, ये क्या है, कौन है भाई? Okay. Since Eco Honors is a tough course, since Eco Honors is a tough course itself, do you recommend doing CFA along with graduation? Absolutely, guys. बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज के साथ साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो साथ साथ कुछ और डिग्री कर रहे होंगे, राइट। आज की डेट में कंपटीशन इतना हाई है कि आप सोचो कि आप सिर्फ इको ऑनर्स कर लो और सामने वाला इको ऑनर्स प्लस एक सर्टिफिकेशन लेकर आया है, सो रिक्रूटर्स उधर जाएंगे, आप ये फेस करोगे, मैं आपको पहले से वार्न कर रहा हूँ, राइट। आई एम एक्टिंग एज अ फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी इन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस पैन इंडिया, एंड ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, राइट। Any certifications to boost CV? Eco graduate also slightly cost effective and from where? पल्लवी, मेरे को समझ नहीं आया। relevant certifications लो, एक्सेल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आंसर दैट क्वेश्चन आई थिंक। एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, राइट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सब की आप यूडेमी से मत लेना, बस कहीं से भी लो, यूडेमी से मत लेना। यूडेमी से आपको थ्योरेटिकल ज्ञान मिलेगा, वो उसका क्या करोगे, वो उससे अच्छा तो आप कोई बुक पढ़ लो, राइट। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, ऐसी सर्टिफिकेशन करिए जो प्रैक्टिकली आपको असिस्ट करे, आपको पता तो हो कि यार इसको अप्लाई कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रिक्रूटर ने आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर हो गया काम, राइट। सो टेक जज फॉर योरसेल्फ, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जज करिए जो प्रैक्टिकल ज्ञान दे पाए आपको, So, ठीक है। यस, so खुशहाली could बोलिए। could you recommend the sites in that case which will provide us practical assistance along with the सॉरी course? कम अगेन। So you said now not to take courses from Udemy because they are more theoretical. So in that case, could you recommend a few sites or like places where we can take these courses from? ओके, सो आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि इको ऑनर्स वालों के लिए डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, राइट। डेटा एनालिसिस, पाइथन, पावर बीआई, विजुअलाइजेशंस, इस सब का बहुत बड़ा रोल है, राइट। एंड इट हेल्प्स यू अलॉट, इट गिव्स यू एन इमेंस बेनिफिट। अब मैं यार, आप मेरे से पूछोगे, मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारा बैच ज्वाइन करिए। वी हैव ऑल दीज टाई अप्स, वी विल गेट यू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वी कीप रनिंग दीज वर्कशॉप्स एंड दीज कोर्सेज। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ मेरे साथ ही ज्वाइन करिए, जज फॉर योरसेल्फ, राइट। गूगल पे लिखिए, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, एंड देख, जस्ट जज फॉर योरसेल्फ, डेमो क्लासेस लीजिए आप, देखिए किसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है। ट्रेनर, देखो, ट्रेनर्स को जज करिएगा जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट चुन रहे हैं। whenever you are deciding for an institute, always look at the trainer, decide for on the trainer। इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े वादों पे मत जाइएगा। मैं आपको ये ब्लंट होके, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे हूँ, ये यूट्यूब पे भी हो सकता है चला जाए, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, हो सकता है ना भी पसंद आए उनको, बट मैं आपको अगेन बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, इफ यू आर लिसनिंग, please, if you are deciding on an institute, judge it basis who is going to take the session, right। वादे तो हर कोई करता है, ठीक है, आप उस पर जज करिए, ठीक है। खुशहाली, look at the institutes, आप All I'll right. just connect with me, I'll connect you to our trainer जो analytics कराता है, and you can judge for yourself, right, the certifications।
All right, sir. Actuarial, you're welcome. I am pursuing actuarial science currently. Is CFA a better course? आज की डेट में absolutely. राइट अगर आप CFA कर सकते हो प्लीज CFA करिए, जॉब लीजिए अच्छी सी एंड करिए एक्चुअरियल साइंस. पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाए एंड यू हैव टू सी द रिटर्न्स आल्सो ऑन इट, राइट? Sir, हाँ बोलो. sir, currently I am in 12th and I am highly interested in finance. I am aiming for a good college in DU and all. So when should I start preparing for CFA? जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर खत्म करने वाले, And when would I be eligible for the CFA exam? थर्ड ईयर में. कोशिश करो आप थर्ड ईयर में दे दो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशंस. Thank you. So, excuse me, sir. हम्म. Since the degrees in DU are of 4 years now, so I am in second year right now. So, am I eligible for the level 1 right now? हाँ हाँ आप अप्लाई कर दो. देखो गाइस, व्हेन यू से यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 1, आप अभी एग्जाम तो दे नहीं सकते. आप अभी रजिस्टर करोगे, आपको टाइम लगेगा, आप कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई करोगे. यू माइट वांट टेक गुड अमाउंट ऑफ 4-5 months, राइट? तो आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पहुंच जाओ और नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे, राइट? तो आप रजिस्टर कर सकते हैं. और गाइस रजिस्टर जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? कैन यू शेयर द पीपल हु हैज डन दिस एंड हैव द प्लेसमेंट? आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करिए. आई विल get you in touch with them. What will be better? I'm currently third year of economics on, ये तो हो गया. Can you share the people? ये भी हो गया. Now in DU our graduation is for, ये भी हो गया. Investment banking का कोर्स कितने टाइम का है और eligibility investment bank. If you are interested in our investment banking course, Lakshay, please connect with us, right? After this session, we will take you through. We'll give you all the information. Which complements with CFA the most? MS Finance और MBA Finance? इंडिया से कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो? इंडिया से कर रहे हो तो MBA Finance, बाहर से कर रहे हो तो MS Finance भी आपको इक्वली हेल्प करेगा, ठीक है? I am an eco honors graduate, have taken a drop year in next 5 to 10. Sorry. I'm an eco honors graduate, have taken a drop year in next 5 to 10 years, which has a more potential of higher return, CFA or MBA or business analyst? क्या मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया गाइस. कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द क्वेश्चन? कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द क्वेश्चन, गौरी? Can you please unmute yourself and help me with the question? Or you can just describe it. Cracking finance internships is too tough. किसने कहा टफ है? Can you recommend some courses or necessary things that should be in resume for finance internship? मैंने आपको बता दिया, Excel, financial modeling, valuations, technical analysis, portfolio. जो आपका इंटरेस्ट एरिया है आप वो करिए. Sir, हाँ जी दिव्यांश. actually I am a little bit confused between CFA and CA as I have already registered for the CA exam, but I think CPT? yes, foundation. हाँ तो दो CPT. But रजिस्टर कर दिया तो देना पड़ेगा. I think it's a traditional course and like वो ट्रेंड में होगा नहीं आज से 5 साल बाद. तो रुको यार 1 मिनट, रुको, रिकॉर्डिंग पॉज करने दो. What about NSE certifications? Are they good enough? यार देखो, NSE certifications कर सकते हो. अगेन आई वुड से कि आप कोई ऐसी सर्टिफिकेशन करिए, अगर आप जज करिए, इफ दे आर गिविंग यू प्रैक्टिकल एक्सपोजर, गुड इनफ, राइट? जस्ट जज एन इंस्टीट्यूट बेसिस कि आपको प्रैक्टिकली कितना हेल्प करेगा वो, राइट? ऐसे तो यार 1 लाख इंस्टीट्यूट से ऊपर बैठे हैं जो ये सब करा रहे हैं. बट अगेन यू एज अ स्मार्ट कंज्यूमर यू हैव टू जज कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन पैसे के लिए काम कर रहा है. बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, राइट? येल यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल मार्केट कोर्स कैसा है? लक्ष्य मेरे को ना ब्रोशर भेज देना. लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट ब्रोशर. आई विल हेल्प यू आउट विद इट आफ्टर दैट. ओके. Quickly taking up the questions. I'm an eco honors grad, have taken it. ये तो हो गया. Which is better for income and high returns, sir? CFA कर लोगे तो आपको अभी
जॉब के साथ इट डिपेंड्स आपको जॉब की रिक्वायरमेंट कब है। अगर आप आराम से बैठ सकते हो तो आप एमबीए कर लो फ्रॉम, बट डू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। अगर आप ड्रॉप ईयर के बाद आपका जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है गौरी, उसके बाद व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप सीएफए करो। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप एमबीए प्लान करते हो तो एमबीए अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करो गाइस, आज की डेट में तभी फायदा है, ठीक है। ओके, when to start preparing for CFA level 1 if you want to give in August 2025? अगस्त 2025 में आप करना चाहते हैं तो आई वुड से कि अगर आप अभी करते हैं अगस्त के लिए अप्लाई, आपको एक तो डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे। डिस्काउंट अच्छे के बाद आपके पास टाइम बहुत होगा, राइट। सो आप अभी, इफ यू हैव दैट बैंडविड्थ कि आप अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो तो आप अभी स्टार्ट करिए, राइट। उससे क्या होगा, प्रेशर भी नहीं होगा। आप अगले साल स्टार्ट करोगे, बहुत प्रेशर आ जाएगा अगस्त के लिए। गुड गुड गुड, बहुत सारे क्वेश्चन है, वेरी गुड। क्रैक ये हो क्या है? हाउ कैन वी कनेक्ट विद यू पर्सनली? आई एम राइटिंग डाउन, आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट करिए गाइस। लिंक्डइन पे यू कैन फाइंड मी बाय दिस नेम आयुष बजाज, ठीक है। आई एम सेंडिंग इट ऑन द चैट। Okay, you can find me by this name on LinkedIn, connect me via LinkedIn, or you can drop me a WhatsApp on this number. That's my personal number, guys. You can drop me a WhatsApp on this number. ठीक है? Does work experience help in CFA? It does. Definitely it does. Practical ज्ञान होगा ना उससे, और जहाँ प्रैक्टिकल ज्ञान होगा वहां पे बहुत हेल्प होती है। NISM का रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन ठीक है? क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? होगा, मेरे को भेजो तो सही इन्फॉर्मेशन। मेरे को एक बार इन्फॉर्मेशन भेजिए वो क्या करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलराइट, वाओ, वंडरफुल। बस इतने ही क्वेश्चन थे? ओके गाइस, बाकी आपको कोई भी हेलो। डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आई एम राइटिंग डाउन द नंबर। मैंने अपना तो दे ही दिया है, साथ में आई राइट डाउन माय टीम नंबर। आप उसमें भी करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर, जो NISM का रिसर्च एनालिस्ट है ना, तो सेबी के हिसाब से वो कंपलसरी है कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन देने के लिए, तो इस वजह से पूछ रहा था मैं। हाँ, तो देखो क्या होता है, आप कर लो, कर लो। अगर आपने उस स्टॉक रिकमेंडेशन में जाना ही जाना है तो वो सिर्फ वो सर्टिफिकेशन हेल्प तो नहीं करेगा। अगर वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है, जैसा कि आप कह रहे हैं, मेरे को एक बार आप भेजिएगा उसका ब्रोशर। अगर वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है तो करिए, करना पड़ेगा, बट दैट विल नॉट सफाइस, दैट विल नॉट बी इनफ। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अमेजिंग सेशन दिव्यांश, थैंक यू सो मच। Sir, can you please elaborate why you said MS Finance complements CFA the most rather than MBA Finance? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने आपको बोला कि आप एमएस फाइनेंस इंडिया से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो। अगर आप ग्लोबली, आप बाहर जाके कर रहे हो, वहां पे एमएस फाइनेंस की वैल्यू बहुत होती है, राइट। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली माइंडसेट ऐसा है कि आप एमबीए करते हो, राइट। अगर आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में देखोगे तो ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आप एमबीए को ज्यादा वैल्यू ले रहे हो या एमएस फाइनेंस को ज्यादा वैल्यू ले रहे हो, राइट। आई हैड वन ऑफ माई टीम मेंबर्स इन EY who had MS finance degree, right, and he is now in London, yeah, working out of EY, I think, and he's doing very well, right? ऐसा नहीं होता। All right, thank you. Should we do CFA for getting into private equity firms? करना पड़ेगा आपको। I wouldn't say it is mandatory, but it is a good negotiating factor सर अगर in फंड taking it. मैनेजर एंड ऑल करना है तो इंडिया में रह के, तो उसके लिए सीएफए आई थिंक हेल्प करेगा ना? करेगा। एसेट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन चीजों के लिए अगर आपने मुंबई या कोई ऐसी जगह पे आप अपना करियर, बैंगलोर वगैरह में सोच रहे हो जो फाइनेंशियल हब्स हैं आज की डेट पे, आपको सीएफए अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए सीएफए मैंडेटरी आज की डेट में, आई वुड से इट इज अ मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। ऑल्सो लीगली मैंडेटरी नहीं है, बट टू स्केल दैट लैडर आपको करना पड़ेगा, और आप करिए, ये आपकी आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। All right. Now, regarding that freebie, guys, there are 47 participants. Let me just take a quick video of
whoever are there, I will match your email IDs and I will be sending you a lot of stuff. Okay. Okay. Wonderful, guys. All right, guys. अरे हमें पिक लेनी थी ना एक ऑन करो अपने वीडियोस